नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट की खास कवरेज मनी 9 पर और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज सबसे बड़ा दिन इकोनॉमी के फ्रंट पर देखिए, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर देखिए, मिडिल क्लास को लेकर अगर कहा जाए, नौकरी-पेशा, महिलाएं, सभी लोगों की नजरें जो हैं आज बजट पर है। बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकता है, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए महेश सर जुड़े हुए हैं एंड विवेक बांका सर। ओवर टू यू महेश सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस बजट? थैंक्स विशाल, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद तो बहुत है, और पिछले 2-3 साल से तो उम्मीद के सामने तो इट हैज ऑलवेज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट. सो वी आर ओनली होपिंग दैट वेदर इट इज इंडस्ट्री, वेदर इट इज इंडिविजुअल, देयर इज समथिंग पॉजिटिव. बट फ्रैंकली आप मुझे पूछो तो इंडिविजुअल टैक्सेशन में आई डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रेट थिंग्स टू हैपन this time, because it's a kind of stable government, second budget. So I think it will not be as exciting as individuals are expecting. Corporates, we are expecting something around indirect tax में अगर कोई benefit मिल जाए, direct taxation में थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ी regulatory bureaucracy कम हो जाए. So that is a usual expectation. I'm personally not very optimistic and expecting something wonderful in this budget. ओके। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप ग्रोवर साहब भी जुड़े हुए हैं। संदीप सर इज वेरी वेल नोन फेस फॉर द मार्केट, मार्केट को कवर करते हैं। ओवर टू यू सर। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, महेश सर एंड विवेक बाका साहब। ओवर टू यू संदीप सर। शुक्रिया विशाल। देखिए, इस बार जो बजट की बातचीत है, जब हम कह रहे हैं कि बजट की स्पीच 11 बजे शुरू हो जाएगी, तो क्या सस्ता क्या महंगा हो जाएगा, कहाँ पे फोकस रहने वाला है, क्या राहत आ सकती है, इसकी हम बातचीत कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे आपकी जेब के ऊपर मार पड़ सकती है, इसी पे हमारा फोकस इस बार है। जहां तक सस्ती होने की बात है, या फिर कुछ चीजें जहां पे कुछ राहत आ सकती है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, अगर जिनका इंपोर्ट होता है वहां पे ड्यूटी अगर कम कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है वहां पे थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जहां पे इस बार हो सकता है कि आपकी जेब के ऊपर मार पड़ती हुई दिखे, या फिर आपका जो खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पहली बात तो ये है कि सिगरेट के ऊपर पिछली बार आपको याद होगा कि कोई टैक्स में या फिर जो ड्यूटीज है उसमें बदलाव नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि इस बार टैक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है और वो ऊपर की ओर रिवाइज हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आईटीसी जैसी कंपनियां, गॉडफ्रे कंपनियां हैं, इनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि आईटीसी तो इसको पास ऑन कर देती है, तो जो ग्राहक हैं, जो माना जाता है कि सिगरेट को लेकर एक इनइलास्टिक डिमांड है, कितना भी महंगी हो जाए सिगरेट जिसको पीनी है वो पीनी है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो ड्यूटीज हैं कुछ थोड़ी सी ऊपर की ओर रिवाइज की जाए, थोड़ा टैक्सेशन जो है जिसको हम सिन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, वो शायद ऊपर की ओर रिवाइज किया जाए, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि इस बार आपको आता हुआ दिखे। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है इस बार बजट में आ सकता है, वो है सोने के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसे हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, वो माना जा रहा है कि इस बार बढ़ाई जा सकती है। पिछली बार आपको याद होगा 15% से नंबर घटाकर 6% कर दिया गया था। सोने की जो बढ़ती कीमत है उससे राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सोने की डिमांड बढ़ गई, मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको संभालने में सरकार को दिक्कतें आती हुई नजर आ रही। तो इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि बजट में जो सोने के ऊपर ड्यूटी है उसको वापस बढ़ाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। तो उससे एक्सपेक्टेड है कि सोने की जो कीमतें हैं शायद उसमें इजाफा होता हुआ नजर आए। और हम इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं, इंडियन मार्केट्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाई रही हैं। एंटिसिपेशन पहले से ही है, लेकिन हाँ, चाहे वो ज्वेलरी कंपनियां हो, चाहे वो आम ग्राहक हो, चाहे वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए या फिर शादी ब्याह के पर्पस के लिए जो खरीदारी करता है ज्वेलरी के लिए या फिर सोने की मांग आती है, उस पर जरूर एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पता ही है हमारे इंडियन कस्टमर जो होते हैं बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो उस लिहाज से ये दो चीजें मेन है, एक तो सिगरेट और दूसरा सोना। यहाँ पे हो सकता है कि मार आपको नेगेटिव साइड पे पड़ती हुई दिखे। सोना भी महंगा हो सकता है, और जो सिगरेट पीते हैं हालांकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ, आपके जेब का खर्च तो डिसाइड होता है ना उससे, तो आपका वो भी खर्च इस बार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है विशाल जी। अब ग्रोवर सर, अब आपसे मार्केट का अपडेट लेना चाहेंगे कि आज तो सेंसेक्स में 200 अंकों की तेजी के साथ 77,710 के आसपास कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी 50 अंकों की बढ़ोतरी है, 23,560 के आसपास है। अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डाटा पे आपके राय लेना चाहूंगा सर। पिछले अगर 6 बजट में देखा जाए तो 3 बार है ऐसा हुआ है कि जब सेंसेक्स जो है नेगेटिव में बंद हुआ है। 2020-21 में आप देखिए तो उस समय जो है -987 पॉइंट्स क्लोज हुआ था। हालांकि 21-22 में ये 2314 रुपए 2314 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ ये क्लोज हुआ था। 22-23 में अगर बात की जाए तो 848 पॉइंट्स प्लस, और 23-24 में 158 पॉइंट्स प्लस, 24-25 में -106, और अभी तक का जो ताजा कारोबार जो हो रहा है, पहले वो समझाइए सर। और इस बार क्या पॉजिटिव या नेगेटिव स्तर पर कहाँ बंद होता हुआ दिखेगा?
देखिए इस बार क्या है ना विशाल, थोड़ा सा पिक्चर अलग है। आप देखें तो पिछले 4 दिन छोड़ दीजिए, जब बाजार में हमने तेजी बनती हुई देखी है, बाकी नंबर्स आप देखेंगे तो बाजार बहुत हल्का है। मैं इनफैक्ट, आपने बजट टू बजट की बातचीत करी है, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं पिछली 4 सीरीज या पिछले 4 महीनों पे। मेरे पास वो आंकड़े सर मौजूद हैं, मैं वो नंबर्स आपके सामने रखता हूं, 1 सेकंड बस मुझे प्लीज दीजिए। प्लीज। 4 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगातार बाजार में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीने के जो आंकड़े हैं, इनफैक्ट 4 सीरीज के आंकड़े आपके सामने रखता हूं, किस तरह से बाजार परफॉर्म करता हुआ दिखा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2011 अंक अक्टूबर में निफ्टी गिरा था, उसके बाद 291 अंक नवंबर में, 164 अंक की गिरावट दिसंबर में, 501 अंक की गिरावट आपने जनवरी सीरीज में देखी है। जो वायदा बाजार की सीरीज होती है उनके आंकड़े में रखा हूं। पिछली 4 सीरीज से बाजार लगातार गिरकर ही बंद हो रहा है, और अगर इन नंबरों को अगर आप मिला लेंगे, आंकड़ों को जोड़ लेंगे, तो पिछले 4 महीने में निफ्टी में 3000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। तो जो पिछले जी बजट है, नो डाउट बजट के दिन अनाउंसमेंट होते हैं, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता है, लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो काफी अलग है। मैं आपको इसीलिए एक भूमिका देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जी बाजार बहुत हल्का होकर बजट में घुसा है। तो केवल ए- 4 दिन हुए हैं जब बाजार में हमने तेजी बनती हुई देखी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हाई लेवल से काफी हल्के होकर हम बजट में घुसे हैं। और अब जो ज्यादा उम्मीद है, जो बाजार को ड्राइव कर रही है, वो केवल इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं उसमें कुछ छूट मिल सकती है। इसी को बाजार मान के चल रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में इतने ज्यादा एंथुसियाज्म या फिर जो यूफोरिया है वो देखने को मिला है, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस है, जो इम्पैक्ट है, वो काफी सारे सेक्टर्स पे आता हुआ दिखेगा। पहले तो सबसे पहले खपत के ऊपर ही जो एफएमसीजी तबका है वो इससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, और उसके साथ साथ जो बाकी रिपल इम्पैक्ट है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, बाकी खपत की चीजें हो, इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। तो इसका जो इकोनॉमी के ऊपर एज अ होल आप ग्रोथ रेट के हिसाब से देखेंगे तो असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो आप यूफोरिया मार्केट्स में देख रहे हैं, आज भी जो तेजी कह रहे हैं, 4 दिन की तेजी के बावजूद आज 5वें दिन जी स्पीच से पहले जी हम इतना उत्साह दिखा रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि सरकार का फोकस शायद खपत और उसके साथ साथ ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर होगा, और इसी तरह के ऐलान आने की उम्मीद है जिसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। जी। ग्रोवर साहब, हमारे साथ विवेक बाका सर और महेश जी भी जुड़े हुए हैं। आप अगर उनसे कुछ कंजम्पशन से रिलेटेड अगर सवाल अगर पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर आप थोड़ा ये बता पाएं कि सरकार के पास गुंजाइश कितनी है इस बार, जितने भी ये खपत से रिलेटेड या फिर जो हम बातचीत कर रहे हैं कि बाजार मान के चल रहा है कि इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं उसके साथ कुछ टिंकरिंग की जा सकती है, सरकार के पास स्कोप कितना है सर? जो जितना फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर सरकार का जोर है, जो हमारे बोरिंग है या फिर जो फिस्कल डेफिसिट को पिछली बार 4.9% रखा गया था, इस बार का जो अनुमान है, बाजार मान के चल रहा है कि लक्ष्य शायद उसको नीचे लाकर 4.5% करने का होगा। सरकार के पास गुंजाइश कितनी है इस चीज की? महेश सर, आप भी बोल सकते हैं, विवेक सर आप भी बोल सकते हैं प्लीज। सो देखिए, आप जो कह रहे हैं और आपने जो शुरुआत की थी कॉन्वर्जेशन की, आप एकदम सही कह रहे हैं। बिकॉज मेरी भी पर्सपेक्टिव यही है कि बाजार में जो है, बाजार हल्का ही है। इट इज नॉट कि फंडामेंटली कुछ बहुत ही स्ट्रांग है जिसकी वजह से बजट की वजह से ऊपर जानी चाहिए। अभी 11 बजे के बाद पता चलेगी कि वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है। बट आपने जैसे कहा कि इंडिविजुअल्स की उम्मीद पे टिकी हुई है और इसके लिए हमको थोड़ी 10 साढ़े 10 बजे ऊपर जाते हुए दिख रही है। बट मेरी एंटिसिपेशन है कि मार्केट या तो फ्लैट होगी या तो थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही होगी, एज वी एंड एज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड्स विद दिस स्पीच। टिंकरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, और अपॉर्चुनिटी की कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। बिकॉज ये कोई ऐसे कोई इलेक्शन ईयर नहीं है या कोई इंटरनेशनल डिस्टेबिलिटी, ऐसे कुछ इंडिया की हालत कुछ खराब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोज कुछ बहुत खराब नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल है, चल रही है, ग्रोथ रेट स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं कि ग्रोथ रेट बहुत गिरी हुई है, बहुत बढ़ रही है। ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल से बजट की ज्यादा फोकस होगी सेलेक्ट सेक्टर्स पे, जहां पे थोड़ी बूस्ट और थोड़ी थोड़ी एनकरेजमेंट की जरूरत है। इंडिविजुअल्स आई डोंट थिंक ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलने नहीं वाली। थोड़ी बहुत टिंकरिंग यहाँ वहाँ होगी टैक्स रेट में, या मे बी कोई सेक्शन 24 डी थोड़ी राहत मिल सकती है, या मे बी एटीसी की लिमिट थोड़ी बढ़ा दे तो राहत मिल सकती है। बट आई डोंट थिंक कुछ टैक्स स्लैब्स या टैक्स रेट्स में जैसे मार्केट में बताया जाता है कि शायद एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख तक लेके जाएंगे, पर मेरे ख्याल से वो सब तो नहीं होने वाला है। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आई थिंक सेलेक्ट सेक्टर्स है
इंफ्रा सेक्टर्स है जिसपे बहुत बूम हो रही है और पिछले 5-6 साल से फोकस भी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ी दबी हुई है, एविएशन सेक्टर थोड़ी दबी हुई है। द ओवरऑल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, थैंक्स टू द पॉपुलेशन, थैंक्स टू द ग्रोथ, थैंक्स टू द एक्सपोर्ट रेशियोज गोइंग बेटर, बट सेलेक्ट सेक्टर्स में ग्रोथ होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल से ब्रॉड लेवल पे फ्लैट बजट होगी, बहुत ज्यादा उम्मीद करने के लिए कुछ हो नहीं रहेगी, बिकॉज इकोनॉमी काफी स्टेबल है, कोई हिली हुई इकोनॉमी तो नहीं है। इसके लिए आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड कि एफएम मैडम क्या बोल रही है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट भी फ्लैट होगा और बजट की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल होगी, ऐसे कोई एबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं आने वाली है। विवेक सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो महेश सर ने बोला सर, उसमें मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा कि इस बार ऐसा कोई इलेक्शन भी हमारे सामने नहीं है जिस वजह से कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो, लेकिन सर एक चीज तो है, दिल्ली का इलेक्शन हमारे सामने है, 5 फरवरी को इलेक्शन होना है, और वही एक डर है जो कि बाजार के सामने है कि ज्यादा सरकार कहीं रेवड़ियां ना बांट दे, कोई बहुत ज्यादा लोग लुभावने फैसले ना कर दे दिल्ली का बजट जीतने के लिए। यही एक डर है बाजार के मन में, शायद जो बाजार को थोड़ा बहुत दिक्कत में ला भी रहा था, लेकिन ये मिडिल क्लास को जो राहत की बात है ना, वो बाजार को ऊपर की ओर ड्राइव कर रही है। दिल्ली का बजट कितना बड़ा स्पॉइलर स्पॉट हो सकता है? तो संदीप जी, वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने बात निकाला भी। देखिए, दिल्ली एज सच छोटी सी जगह है, बट अगर आप ये फ्रीबीज जो बांट रहे हैं, हम फ्रीबीज जो आप देखो महाराष्ट्र स्टेट में, फ्रीबीज आप देखिए कर्नाटका स्टेट में, फ्रीबीज आप देखिए हरियाणा पंजाब में, फ्रीबीज आप देखिए वेस्ट बंगाल में, फ्रीबीज आप देखिए उत्तर प्रदेश में, अभी ये सब अपने भारत के बड़े बड़े स्टेट्स है। यहाँ पे तो ऐसी ऐसी फ्रीबियां बांटी जा रही है कि सवाल यही उठता है कॉमन आदमी के दिमाग में कि पैसे आएंगे कहाँ से? आएंगे या तो कॉर्पोरेट से आएंगे या तो इंडिविजुअल से। तो जहां जहां बांटनी है इन्होंने ऑलरेडी बांट के रखी हुई है, जो मई में इलेक्शन हुई और जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस में हुई, तो बड़ी बड़ी स्टेट्स में तो डेफिनेटली फ्रीबीज काफी बांटे जा रहे हैं ऑलरेडी। कहीं कहीं पे तो ऑलरेडी वो दिक्कतें भी पेश कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में ही है, बिफोर इलेक्शन फ्रीबीज क्रेडिट वगैरह हो रहे थे, आफ्टर इलेक्शंस न्यूज ऐसे आ रहा जा रहा है कि वो फ्रीबीज जो प्रॉमिस किए थे इलेक्शन के पहले क्रेडिट हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, राइट। सो वो वाली इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। दिल्ली की वजह से होगी तो भी इट विल बी अ टेम्पररी सेंटिमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मेजरली इम्पैक्ट, इज माय पर्सनल व्यू। बाजार ये समझना चाहता है कि कहीं फोकस ज्यादा दिल्ली के इलेक्शन पे ना हो जाए, आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी इकोनॉमी को जरूरत है, उसके ऊपर आपका ध्यान ना हट जाए, ये एक बात है। दूसरी चीज मैं आपसे महेश सर जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है, आपने कहा कि 10 लाख वाली जो एक लिमिट है, उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश यहाँ पे नहीं नजर आती। लेकिन मैं आपको कल के इकोनॉमिक सर्वे में लेके जाना चाहूंगा, उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि हमारे यहाँ पे ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है सेविंग्स की। कुल मिला के देखा जाए तो बाजार का, जब सरकार का फोकस इस चीज पे है कि बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है, एफडी से पैसा निकल के जो सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है, वो एक दिक्कत की बात है। तो बैंकों में वापस पैसा लाने की या फिर जो एफडी के ऊपर बाजार का रुझान है सरकार का, उसको बढ़ाने की यहाँ पे कवायद जरूर देखने को मिल सकती है। क्या इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट इस बार बजट में एक्सपेक्टेड है? क्योंकि जब सरकार खुद सामने से कह रही है ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में लाने की बातचीत की जा रही है, ओल्ड में जहां एटीसी में 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलता था जो कि पूरा तरह से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होता था, तो क्या सरकार इन्वेस्टमेंट को खत्म करके एफडी को इंसेंटिवाइज करने के ऊपर कुछ ऐलान कर सकती है? संदीप जी, अगेन वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, वैलिड पॉइंट। सबसे पहले आप मुझे पूछेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये सब कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली एक टैक्स रिजीम होनी चाहिए, फ्लैट टैक्स रेट होनी चाहिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया सरचार्ज, सेस वगैरह क्या होती है। मतलब इंसान कुछ कमा ले या कंपनी कुछ कमा ले, उस पर एक फ्लैट रेट पे एक टैक्स दे दे, स्टोरी वहीं पे खत्म होनी चाहिए। एक टैक्स रिजीम रखिए, चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, राइट। सेकेंड इज ये सेस सरचार्ज वगैरह छोड़ के फ्लैट रेट्स कर दीजिए कि 10%, 20%, 30%, 30% पे आप कैपिंग कर दीजिए, उसके ऊपर भी टैक्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा टैक्स करने हैं तो लॉटरी, गैम्बलिंग, वो नेचर ऑफ बिजनेस में आप कर लीजिए, उस पर 50% भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान के लिए, हर कंपनी के लिए बोनस ही होती है। नाउ कमिंग टू बूस्टिंग दी कल्चर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कल्चर, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे या हम अपने कैरियर 20-25 साल पहले के देखेंगे, तो हम कहाँ सेव करते थे? हम नेशनल सेविंग स्कीम में सेव करते थे, पीएफ में सेव करते थे, वॉलंटरी पीएफ में सेव करते थे, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में सेव करते थे, जहाँ पे गवर्नमेंट को फ्री फ्लोट फंड काफी मिल भी जाती थी और उसमें काफी सारे
इंडिविजुअल्स को भी टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिल जाती थी। बट अगर आप देखेंगे पिछले 5-8 साल में, स्पेशली 2020 के बाद, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जिसकी एज कैटेगरी घटती जा रही है, बिकॉज टुडे हमारी मेजॉरिटी वर्किंग पॉपुलेशन 40 के नीचे है, वो एक मार्केट की मिथ। ओके, ठीक है सर। तो विवेक जी, आपसे भी सवाल यही है जहां से हमने डिस्कशन की शुरुआत करी थी। स्टॉक आपकी मार्केट में क्या, देखोगे, सॉरी सॉरी सर, प्लीज पूरा कीजिए सर, आप कुछ कह रहे थे। सॉरी, मैंने कहा कि मैं खुद मार्केट में 1999 से इन्वेस्ट करता हूँ। 1999 से हमने कम से कम 4 या 5 राइज एंड डिप देख चुके हैं, एंड वो नॉर्मली हमारी जनरेशन कहती है कि हर 5 से 6 साल में एक बेल कर्व टाइप आ जाती है, और शायद हम इस वक्त बेल कर्व के बॉटम साइड में बैठे हुए हैं। अभी वेदर बजट प्रमोट्स और डजंट प्रमोट, इंडिविजुअल जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में थोड़े पैसे बनाए हुए हैं, और मार्केट अभी जब नीचे जा रही है, और ये भी प्रेडिक्शन है कि शायद 2025 मार्केट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव या एग्रेसिव साल नहीं होगा, ऑटोमेटिक डाइवर्शन सेफर एवेन्यू एफडी में जाने वाला है। और आज आप देखोगे तो एफडी ऑलमोस्ट 7.758% इंटरेस्ट रेट टच कर चुके हैं, इन द 18 मंथ बकेट, 24 मंथ बकेट। So there is going to be a natural movement from the stock markets to the secure deposits and secure investment channel, whether the budget promotes or not. But personal view मेरा ये है कि budget has to give more avenues to save. आज की जनरेशन पीएफ ऑप्ट ही नहीं करती है, राइट? आज की जनरेशन पेंशन स्कीम में कुछ बिलीव ही नहीं करती है। सो टू फोर्स सेविंग्स व्हिच दिस जनरेशन इज ट्राइंग टू लुक एट। सेकंड थिंग, अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे कंज्यूमिंग स्पेंडिंग इकोनॉमी होती जा रही है, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो हम स्पेंड कर रहे हैं। तो सेविंग्स प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिमूव मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे पहले ये फ्लेक्सी बॉन्ड होती थी, टैक्स सेविंग बॉन्ड होती थी, वो सारी बॉन्ड्स अभी निकलती नहीं है, सो देयर इज नो फोर्स सेविंग्स। ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एकदम लिमिट्स ही बहुत कम है। न्यू टैक्स रिजीम में जाओ तो कुछ है नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में लिमिट्स बहुत कम है। हाउसिंग सेक्टर एज एन इन्वेस्टमेंट, मिनिमम आप अगर एक मेट्रो सिटी में एक ढंग की फ्लैट लेना चाहते हो तो 1 करोड़ की लोन लेनी पड़ती है। 1 करोड़ की लोन में कोई खास लुक्रेटिव टैक्स बेनिफिट है नहीं, तो इसके लिए इवन द जनरेशन इज प्रेफरिंग टू मूव इनटू रेंटल accommodations. So overall, I think government, instead of looking at tax slabs, should more look at promoting the saving avenues and the opportunities to get tax saving on opting for loans. ये दो चीज पिछले 5 साल से गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं फोकस कर रही है बजट में। ओके, सुपर। विवेक सर, आपके पास भी इसी सवाल के साथ में आना चाहूंगा जहां से हमने डिस्कशन की शुरुआत करी थी। कितना स्कोप है सर गवर्नमेंट के पास? ये जो हम कह रहे हैं कि राहत दी जा सकती है कुछ इनकम टैक्स के मोर्चे पर, मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा है, खपत को बढ़ाया जाए, उससे फिर इकोनॉमी में ग्रोथ को जो एक बार बूस्ट करने की कोशिश सरकार की है, कितना आपको वायबल लगता है सर इस बार के बजट में ये हो सकता है? आई थिंक वी शुड टेक वन स्टेप बैक। अभी आरबीआई के पास काफी इश्यूज है। एक है कि विद ट्रम्प कमिंग इन, ट्रेड वॉर्स के काफी इशू है, इंपोर्ट पे कितने टैक्स लगेंगे यूएस पे, उस पे इश्यूज है। करेंसी इज फॉलिंग, करेंसी कहाँ जाके रुकेगा अभी नहीं पता है। अगर ट्रेड वॉर्स बहुत बढ़ जाएंगे तो हो सकता है करेंसी काफी नीचे और गिर जाए, वो एक चीज देखना है। इन्फ्लेशन इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल, तो रूरल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है। देन पर्सनल लोन्स का राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी वहाँ पर। अब अगर आप देखोगे तो एमएफआई सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज आ रहे हैं। तो इस बार मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2-3 साल में, जैसे 2008-9 में जो क्राइसिस आई थी वो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट में आई थी, इस बार पर्सनल डिफॉल्ट में आएंगे। एंड तो आरबीआई दो लग रहा है कि काफ़ी सिंपल है, गवर्नमेंट एंड आरबीआई के पास काफ़ी कुछ मैनेज करने को है, सो दैट नेक्स्ट 2 इयर्स में कुछ बड़ा इशू नहीं हो जाए इकोनॉमी में। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक कि गवर्नमेंट विल नॉट डू एनी मेजर टिंकरिंग। तो काफी एक्सपेक्टेशन अभी बैठ गया, जैसे आपने भी बोला, मार्केट लास्ट 4-5 दिन में बढ़ा है क्योंकि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि पर्सनल इनकम टैक्स कट होंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था 2 महीने पहले कि कुछ काफी काम चल रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि वहां पर क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। उसमें कुछ मेरे को लगता है उसमें एक बड़ा न्यूज़ या अनाउंसमेंट इस बार द फाइनेंस मिनिस्टर शुड गिव कि वहाँ पर क्या अपडेट है, क्या होगा। एंड आई थिंक ये जो डायरेक्ट न्यू टैक्स रेजीम है, ओल्ड टैक्स रेजीम है, इससे मर्ज करके डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। रोबर्ट साहब,
प्लीज गुरु सर, साहब प्लीज। हमारे साथ मिस्टर मनोज जुड़े हुए हैं मैक्सिमम वेल्थ के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है मनी 9 पर। धन्यवाद सर। कैसे देख रहे हैं सर, क्या उम्मीदें हैं आज बजट से? देखिए, इन शॉर्ट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहने की एक्सपेक्टेशन है। और देखिए, इकोनॉमी जो है एक बलून की तरह है, एक जगह आप दबाएंगे तो दूसरी जगह फूल जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो हमको नहीं पता कि कौन से इश्यूज एड्रेस होंगे, कौन से नहीं। हम सब गेस ही कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो कल हमको इंफॉर्मेशन मिला है, उससे हमको लगता है कि ग्रोथ गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम विकसित भारत का हमारा ऑब्जेक्टिव है 2047 के लिए, जिसके लिए 8% सालाना ग्रोथ की जरूरत है, और हम 6.4 6.5 पे हैं। तो ये एक बजट में या एक साल में तो होने वाला है नहीं। तो दिस बजट मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन ले करने की कोशिश करेगा कि अगले 8 10 20 साल में हम कंसिस्टेंट सस्टेनेबल ग्रोथ देखें। तो बहुत सारे पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, जिसके बेसिस पे हम ये उम्मीद कर सकेंगे कि हमारी ग्रोथ आगे बढ़ी। हम आज के दिन पे हमारा फोकस रहता है टैक्स कट्स पे, कि भाई टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ड्रास्टिक टैक्स कट्स होंगे, क्योंकि हमारा अगर फोकस ग्रोथ पे है तो सभी को पता है कि ग्रोथ के हमारे जीडीपी के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अभी कल इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि कंजम्पशन स्लगिश नहीं है। जब ये जो साधारण एक नॉर्मल फीलिंग Q2 के नंबर्स के बाद में आ रही थी कि कंजम्पशन कम हो गया है, कंजम्पशन को बूस्ट की जरूरत है, उसके लिए टैक्स कट की जरूरत है, बट इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। दे आर ओके विद द कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन में गवर्नमेंट नहीं देखती है कि बहुत कुछ गिर रहा है, तो हम बहुत ड्रास्टिक टैक्स कट्स नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट के हाथ में जी है, कैपेक्स है। तो रादर देन होपिंग दैट आई विल गिव टैक्स कट्स एंड पीपल विल गो एंड स्पेंड, गवर्नमेंट में से भाई वो स्पेंड करेगा या गोल्ड खरीद के बैठ जाएगा या जमीन खरीद के बैठ, उससे अच्छा मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं और मैं स्पेंड करता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम रनअवे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नहीं जा सकते। हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाता है और इंडिया नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आती है, कोई एक एजेंसी दे देती है, वेदर biased, unbiased, whatever, and we fall to non-investment grade because our fiscal deficit is beyond acceptable limits, then the entire calculation goes wrong. हमारा फोकस अभी कैपिटल कंट्री में लाने के लिए है, तो हम FII से ज्यादा FDI पर फोकस करेंगे। हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमको फोकस देना है, तो हम बहुत सारे स्कीम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए और ऐसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि ये एक्सपोर्ट भी करें। तो वी विल सी ए लॉट ऑफ स्कीम्स, और जिसका हमको कल परसों रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 10-12 साल में इंडियन प्रोड्यूसर का माइंडसेट है कि मैं क्यों मेहनत करूं, मैं चाइना से मंगा लूंगा और यहाँ पे बेच लूंगा और मेरा प्रॉफिट कमा लूंगा। मैं क्यों प्लांट लगाऊं, लोगों को लगाऊं, सरदर्दी झेलूं, टैक्स भरूं। मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करना है और यहाँ पे बेचना है और पैसा कमाना है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमको प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जो पहले का PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लागू किया है, वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। तो हमको जो है उस पर इस बजट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम बहुत सारे स्कीम्स देखेंगे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, और हमारा इंपोर्ट रिडक्शन करे। आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी में, सॉरी कुछ मनोज सर, इससे पहले आप कंटिन्यू कीजिए। बजट से पहले ही इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बुरी खबर भी आई है। देखिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का जो उत्पादन है, यानी इसको आप जो देश का जो कोर सेक्टर मानते हैं, इसमें सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट देखने को मिली। नवंबर 2024 के मुकाबले में कोर सेक्टर में गिरावट आई है। वही दिसंबर 2023 के मुकाबले में देखें तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट है। अब देश का जो कोर सेक्टर है सर, दिसंबर के महीने में 4% पर रह गया है।
नवंबर के अगर मुकाबले में अगर इसको कंपैरिजन करेंगे, संदीप सर भी ग्रोवर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये खबर भी कैसे देखी जाए बजट से पहले? नहीं, कोर सेक्टर के आंकड़े जैसे आप बयां कर रहे हैं वो सही में अपने आप में थोड़ा सा तस्वीर जो है वो इस तरह की बयां कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन विशाल, एक बात जरूर है, जितना भी डिस्कशन अभी तक हमने किया है, पूरा जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, आम राय है, कंसेंसस इस बात को लेकर है कि इस बार जो टैक्स में कोई बड़ी कटौती इस बार नहीं देखने को मिलेगी, कोई बड़ी टिंकरिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकती। लेकिन विवेक जी, जैसे आप हाईलाइट कर रहे थे कि इस बार टैक्स में ज्यादा कुछ कटौती होने का यहाँ पे अनुमान नहीं है, तो क्या फिर पूरा दारमदार अब 5 तारीख को जो पॉलिसी बैठक होने वाली है आरबीआई की, उसमें ऊपर शिफ्ट होगा? क्योंकि अगर आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं छोड़ेंगे, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं आएगा, तो क्या फिर आरबीआई के ऊपर दारमदार आ जाएगा कि वो आपकी जो लोन की दरें हैं, जो आपकी ब्याज दरें हैं, उसको कम करें, उससे कुछ राहत मिले लोगों के पास? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई के पास ज्यादा स्कोप है अभी इंटरेस्ट रेट कट करने का। इनफैक्ट मेरा व्यू है लास्ट एक साल से कि आरबीआई के पास रूम बहुत कम है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्लस करेंसी के भी बहुत प्रॉब्लम्स है। करेंसी ऑलरेडी ऑल टाइम लोज पे है। अगर ट्रम्प ने जो वो बोल रहे हैं वो करते रहे तो करेंसी हो सकता है और भी नीचे गिर जाए। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स और लोअर करने का सिचुएशन चांसेस बहुत कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी ठीक है, और इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ज्यादा गिरने से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिमांड विल राइज और समथिंग। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट जो है ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स में मेरा व्यू है कि थोड़ा बहुत श्योरली कुछ ना कुछ तो होगा। कितना होगा ये नहीं पता मुझे, बट कुछ ना कुछ होगा। इधर स्लैब्स बढ़ेंगे या डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, उसमें जो लोअर इनकम स्लैब्स है उसमें श्योरली कटौती होगा। आई मीन द स्लैब्स विल गो अप, बट तो उससे कुछ ना कुछ कंजम्पशन श्योरली आई थिंक बढ़ोतरी होना चाहिए। बिकॉज कंजम्पशन बढ़ोतरी जो आप देखोगे लास्ट 2 साल में पोस्ट पैंडेमिक डिमांड था, वो अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। तो अभी इकोनॉमी को स्पर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, एंड इंटरेस्ट रेट्स पे उनके पास स्कोप मेरे ख्याल से है नहीं, बिकॉज ऑफ करेंसी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोन डिफॉल्ट गोइंग अप। तो वो बहुत बड़ा सिचुएशन है। अगर नेक्स्ट 3-6 महीने 12 महीना में एमएफआई सेक्टर को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, पर्सनल लोन्स को कंट्रोल नहीं किया, स्टॉक मार्केट के लोन्स बहुत ज्यादा है। अगर आप एक चीज देखोगे, अगर निफ्टी यहाँ से और 5-7% गिरती है तो मेरा ये मानना है कि बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है बाजार में, क्योंकि बहुत लोग एफ एंड ओज में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्सनल लोन्स देके। अगर आप उसके डेटा देखोगे तो मेरे ख्याल से आरबीआई को बहुत एक टाइट बैलेंसिंग करना है। तो जैसे पहले महेश जी और सब आपने भी बोला, मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री विल ट्राई टू प्ले इट वेरी लेवल हेडेड। थोड़ा बहुत गैलरीज के लिए वो पर्सनल टैक्स रेट कट्स थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतना भी बढ़ गया। अगर वो नहीं आती है तो आई थिंक मार्केट काफी गिर सकता है अभी। तो आई थिंक फॉर द गैलरीज दे माइट प्ले थोड़ा बहुत करने के लिए। बाकी आई थिंक पीएलआईज जो ओवरऑल स्कीम्स है वो होंगे, एंड आई थिंक दे विल प्ले इट। और एक चीज आप देखोगे तो इस गवर्नमेंट का स्पेशली लास्ट 8-9 साल से बजट पे फोकस एज एन इवेंट कम रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ नॉन इवेंट। तो उन्होंने क्या है कि पूरे साल भर वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। बजट एज अ पर से उनका जो इम्पैक्ट है उसने काफी रिड्यूस कर दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, आपने देखा ही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गठबंधन सरकारें होती थी तो बजट ही एक इवेंट होता था जब सारे जो डिसीजन है एक साथ आते थे, और इस समय इनफैक्ट जीएसटी भी नहीं होता था, तो जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव होते थे वो भी बजट में ही आते थे। अब एक नॉन इवेंट की तरह होता जा रहा है। आपने निफ्टी की बात करी, बाजार की बात करी, लोन लेकर पैसा लगाने की बात करी, तो थोड़ा बाजार को भी टच कर लेते हैं। हमारे साथ नीतिलेश पावस्कर जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं, वेट कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। गुड मॉर्निंग सर, और सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। तो सर, हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से राहत दी जाए लोगों को, क्या बदलाव हो सकते हैं, और क्या सस्ता क्या महंगा हो सकता है। और इस बार माना जा रहा है कि आईटीसी जो कि परफॉर्मर रहा है ज्यादातर बजट्स के दिन पे, तो इस बार माना जा रहा है, वाइडली एंटिसिपेटेड है कि शायद कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर ऊपर की ओर आ सकता है, सिगरेट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। मेरी थोड़ी देर पहले भी किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है आईटीसी, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, ड्यूटीज जिधर भी ट्वीक की जाती है, अगर नहीं की जाती हैं तो भी, अगर बढ़ा दी जाती हैं तो भी, कम होने के तो चांसेस बहुत ही कम है। तो उस लिहाज से सर, आईटीसी और ये जो पूरा तबका है उसको लेकर आपका व्यू क्या है? कैसे पोजीशन है आईटीसी का स्टॉक?
देखो आईटीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में जब तक ये 460 465 ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा। लेकिन अगर समझो कुछ गलत होता है और नीचे अगर आता है तो स्टॉक तो लेने की कोशिश करें। 350 360 ये लेवल अगर कुछ देखने को मिलता है तो वहां पे आप लेके चल सकते हो आईटीसी की पोजीशंस, क्योंकि वो जो लेवल है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला लेवल है। तो आप वहां पे पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 320 का आपको क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अभी देखो ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग निगेटिव व्यू के साथ बजट को देख रहे हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जब भी हम लोग किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तभी वो सरप्राइज हमें देखने को मिलता है। और थोड़ा बहुत भी मार्केट थोड़ा सा सरप्राइज करता है तो जो बाउंस आएगा वो उस बाउंस में निकलने की कोशिश करे। क्योंकि जब मैं सर को सुन रहा था तब एक चीज उन्होंने एक सही कही कि एफएनओ में ज्यादा लोग पोजीशंस बना रहे हैं और वहां से क्या हो रहा है कि जो चीजें हैं वो हद से ज्यादा खराब होती जा रही है। तो मैं सर के साथ वो एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज मिथिलेश का जी, हमें याद। हाँ, तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो थे, प्री बजट मीटिंग कहिए, प्री बजट कंसल्टेशन कहिए, उसमें देश के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से इन्होंने यही गुजारिश की कि देखिए आपने तो अपना झोली भर लिया सर, एसटीटी से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार के 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं, 50,000 करोड़। और जो निवेशक है, जो ट्रेडर है, जो समझिए एफएनओ में 10 में से 9 लोगों को घाटा हो रहा है। औसत जो नुकसान है 50,000 से लेकर 1 लाख तक है। ये बात आप भी मानेंगे? 100%। देखो अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे ना तो कल परसों के दिन मेरे स्टूडेंट ने एक मुझे पीएनएल शेयर किया। 25,000 का प्लस था, लेकिन टैक्सेस जो 30-35,000 के लग गए थे उसको। तो वो चीज है, मतलब हम लोग मेहनत कर रहे, सब कुछ चीजें कर रहे और ले जा रहा है कोई और ही चीज। क्योंकि देखो एससीटी वगैरह काफी बढ़ रहे हैं, सब कुछ चीजें, और मूड और माहौल इतना है कि थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में अचानक से मूवमेंट आता है। आप में सीधा ये चीज मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन मूवमेंट जो आ रहा है वो एक रिटेल ट्रेडर के हाथ से बाहर जा रहा है। पहले आपने ये चीज कही कि एफएनओ की लॉट साइज बढ़ाए, लॉट साइज बढ़ाने के बाद लिक्विडिटी कम हो गई और वहां से प्रॉब्लम ये होना चालू हो गया कि बाजार अचानक से मूवमेंट देना चालू होता है। तो पहले तो ठीक था जब कॉन्ट्रैक्ट साइज जो था वो कम था, लोग कम लॉसेस करते थे। अभी लॉट साइज बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, और लॉसेस होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जो है वो अचानक से मूवमेंट आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी था लेकिन अभी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है ये चीज। अच्छा सर, एक हमने आईटीसी की बात करी, सीमेंट सिगरेट के ऊपर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। दूसरा है सोने के ऊपर हो सकता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह से सोने की खपत या फिर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडिया में, तो उसको लेकर पहले से ही हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते की हम बात करें तो 1,550 रुपए या 1,500 रुपए के आसपास का जंप इसी हफ्ते हम सोने की कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना पहुंचा है, ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी सोना रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से अगर ये ड्यूटी ऊपर की ओर रिवाइज की जाती है सोने के ऊपर, अगर तो पहली बात तो आप चूंकि कमोडिटीज को भी ट्रैक करते हैं, तो सोने के दाम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या फिर दाम ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा और उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा ज्वेलरी कंपनीज पर भी, और हमारे जो वैसे लोग खरीदारी करते हैं या खपत के लिए यूज करते हैं ब्याह शादी के लिए, उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा? देख, फिजिकल गोल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2020-2021 में 40,000 के आसपास था, तभी भी लोग ले रहे थे। 80,000 आ गया तभी भी लोग ले रहे, क्योंकि एक इंडियन वुमेन का या फिर जो ये सब कुछ चीजें है तो उनका एक गोल्ड के साथ अटैचमेंट होता है। अभी 88,000 भी चला जाएगा ना तो भी लोग लेंगे। जब भी शादी होगी, घर में कोई त्योहार होगा, लोग लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये वाला लेवल जो है वो ठीक नहीं है। मैंने 79,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया था, वहां से अभी 82,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन नीचे में 81,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा सोना करेक्ट हो सकता है। ऊपर में 83,000 क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा और मोमेंटम बुलिश साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन गोल्ड अभी देखो, जो चीज बढ़ रही है लोग लेंगे, कुछ भी करो, कहीं से भी पैसा अरेंज करेंगे, लेकिन गोल्ड लेंगे। अगर शादी हो या फिर कुछ फंक्शन हो तो गोल्ड लेंगे। लेकिन गोल्ड में आप एक चीज देखो, सॉरी टू मार्जिन, आप अभी सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चीज हुआ था लास्ट 2-3 महीने पहले, आप लोगों को पता है कि नहीं, आरबीआई ने जो वो सोना वो लंदन में रखती थी, वो काफी वो सोना उसने इंडिया 100 टन वापस, सर, 100 टन 2 बार लाया गया था ब्रिटेन से। 2 बार ला गया था। तो अभी आप चाइना देखोगे तो लास्ट 2 दिन पहले ही चाइना ने बहुत बड़ा लॉट गोल्ड खरीदा है। तो अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं इतने ज्यादा,
तो श्योरली वो गोल्ड के प्राइसेस को भी करेक्ट नहीं होने देंगे 12 से 15 महीना पहले, वो पहले निकलेंगे, उसके बाद ही वो करेक्ट होने देंगे। तो गोल्ड मेरे ख्याल से 1 लाख का लेवल, मेरे ख्याल से आई मीन वो बोल रहे हैं ऑफ कोर्स आई थिंक शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि काफी ज्यादा है, बट 1 लाख का लेवल इज समथिंग विच सूनर और लेटर गोल्ड का वो दिखने मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प भी है तो वो भी काफी यहाँ पर पुश करेंगे। तो आई थिंक गोल्ड इज, विवेक सर, आपने ट्रम्प का जिक्र किया तो देखिए ट्रेड वार का तो ऐलान कर दिया इन्होंने। व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी जा रही है कि कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लागू होगा, वहीं चीन से होने वाले इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ शनिवार से लागू हो जाएगा। अब देखिए, अब तो ये ट्रेड वॉर तो शुरू हो गया सर। नहीं देखिए, अभी जो हुआ है ये सब चीज काफी एक्सपेक्टेड था, और मेरा जो मानना है ट्रम्प का अब लास्ट प्रेसिडेंसी में तो देखोगे तो वो जितना पागल जैसा बात, सॉरी माने वो जैसा बात करते हैं, माने इनका तो फेमस भी है सर, ट्रिपल टी। एक्शन उतना ट्रिपल टी इनका फेमस है सर विवेक नहीं है। जी जी जी, तो ट्रिपल टी इनका फेमस है विवेक सर, ट्रम्प, ट्वीट और टैरिफ। ट्वीट भी इनका कभी ना कभी रात को कभी भी आ जाता है, उससे कोहराम मच जाता है। मुझे तो लगता है कि वो मार्केट में भी खेलते हैं अपने ट्वीट्स के साथ, बट उनका एक्शंस आर मोर नुआंस्ड, यानी कि उनके एक्शन काफी सोचे समझे होते हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 महीना में हमें ये पता चलेगा कि जो वो उतने धमका रहे हैं उतना उनका एक्शन खराब नहीं है। और जो डी-डॉलराइजेशन पे भी उन्होंने धमकी दिया है ब्रिक्स कंट्रीज को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी हो, मैंने क्या होगा किसी को नहीं पता, बट गोल्ड एज अ कमोडिटी आई थिंक नेक्स्ट 12 मंथ्स में शुड डू वेल। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि सिल्वर भी जो अभी नहीं बढ़ा है, सिल्वर और गोल्ड का जो गैप देखोगे, वो गैप थोड़ा सा और रिड्यूस होना चाहिए इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। निखिलेश जी, व्हाट अबाउट एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इसको डिसकंटिन्यू कर सकती है। सरकार को इसका घाटा हो रहा है। पर्पस था कि जब सोने की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए निवेशकों का रुझान जो है वो बढ़ना चाहिए, 2.5% का ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन देखिए वो सोना तो अब 80,000 और सर तो करने के लकटकिया हो जाएगा। अब वो तो है ही, मतलब क्या डिसीजन आता है उसके ऊपर थोड़ा सा ये चीज हमें देखनी चाहिए। बीच में न्यूज तो आ रहा था कि अब बंद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है उनका। तो मतलब जो जिसके लिए उन्होंने किया था वही पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और सर के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो बोल रहे कि 1 लाख का गोल्ड का भाव, वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। और मैंने उस समय पे भी एक चीज कही थी कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है गोल्ड में। तो गोल्ड के ऊपर व्यू अभी भी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला जो करेक्टिव व्यू है उसके ऊपर 81,500 इंपॉर्टेंट लेवल इसके नीचे, और गोल्ड में 74,000 75,000 इसके नीचे अभी के लिए 12 महीने की साल भर का व्यू अगर हम लोग रखेंगे तो इसके नीचे तो नहीं जाते हुए लग रहा है गोल्ड। तो गोल्ड यहाँ से अगर गिरता भी है तो फिर से बाउंस बैक ही करेगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए। हाँ प्लीज बोलिए संदीप सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा उसके बाद, क्योंकि आप दोनों मार्केट एक्सपर्ट ही हैं। जीरोधा के को फाउंडर का बयान आ रहा है सर, अभी जस्ट ब्रेकिंग। नितिन कामत ने कहा कि बजट के दिन ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बजट के चलते बाजार में उतार चढ़ाव होना तय है। पहला सवाल आपसे ग्रोवर साहब, अभी क्या चल रहा है विक्स, वो बताइएगा। और उन्होंने कहा कि सावधानी से ट्रेड करें। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और अगर आप खुद को ट्रेडिंग से रोक नहीं सकते हैं तो आपको इवेंट के दिनों में ट्रेडिंग की जो साइज है वो कम कर देनी चाहिए। ओवर टू यू सर। वैसे तो आप इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स तो आज 9% नीचे है। तो वैसे इवेंट से पहले हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आज इवेंट का दिन है और इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि आज 8-9% के आसपास की गिरावट है। लेकिन आप एक महीने का ट्रेंड भी अगर देखेंगे, मैं आपके सामने ये डेटा लाने की कोशिश भी करता हूँ। ये जो इंडिया विक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने इसका चार्ट सामने रख रहा हूँ। देखिए आप, ये एक महीने का चार्ट आपके सामने है। आप देख भी पा रहे हैं किस तरह से मूवमेंट बनता हुआ दिखा है इंडिया विक्स में। और इनफैक्ट आज का जो सेशन है उसमें कहीं ना कहीं बाजार इस चीज को लेके मान के चल रहा है कि शायद जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है, पूरी जो क्यासबाजी है, जो पूरे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, वो शायद खत्म होते हुए दिखेंगे। तो शायद उसका एक इम्पैक्ट है जो कि नेगेटिव साइड पे इंडिया विक्स पे देखने को मिला। लेकिन हाँ, कामत साहब की जो आप बात करें, जो कमेंट आया है वो वाजिब है। हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं, बल्कि पावस्कर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, उनका भी यही राय था। कल भी हमारे साथ बातचीत हो रही थी उनकी, वो यही कह रहे थे कि आप अपनी पोजीशंस हल्की रखिए, थोड़ी पोजीशंस रखिए, स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मूवमेंट बहुत तेज आता है, क्योंकि जब भी कोई इम्पैक्ट आता है, किसी भी खबर आती है, कोई भी अनाउंसमेंट होता है, कोई ऐलान होता है,
तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो उस लिहाज से आपको अपना पैसा बचाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। केवल बजट ही एक दिन नहीं है जिस दिन आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर बाजार में पैसा बना सकते हैं, गंवाने के चांसेस बल्कि ज्यादा होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ, सब्र के साथ, थोड़ा आप पेशेंस के साथ काम लीजिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के थोड़ी पोजीशन रखिए जितनी आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो बात उनकी वाजिब है। तो खास तौर पे कल तो पावस्कर साहब कह भी रहे थे, जिस तरह से लॉट साइजेस बढ़ते हुए दिखे हैं एफएनओ साइड में, उसमें आपके जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए। 2-3 रुपए का भी मूवमेंट अगर होता है तो कल ही हमें सर बता रहे थे कि काफी ज्यादा आपके जो लॉसेस होने की गुंजाइश है बढ़ जाती है। तो इसलिए स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े नहीं रखने हैं, आपको छोटे ही रख के चलने हैं। तो कोई भी इवेंट जिस दिन होता है तो उस दिन वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है। काफी वाजिब उन्होंने जो अपनी तरफ से टिप्पणी की है और लोगों को एक तरह से आगाह करने की कोशिश की या फिर सतर्क रहने की जो बात करी है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। सर 1-2 मिनट ही बचे हैं स्पीच शुरू होने में। नितलेश सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं पीएसयू डिफेंस, पीएसयू रेल स्टॉक्स को लेकर और जो ग्रीन एनर्जी को लेकर अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा वाइडली एंटिसिपेटेड है कि ये कुछ बड़े ऐलान है जो कि शायद बजट में आने ऑलमोस्ट तय ही है। तो यही एक एक्सपेक्टेशन है जो कि इन स्टॉक्स को ड्राइव भी कर रही है। पीएसयू डिफेंस, पीएसयू पावर और जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इनको लेकर कैसे ट्रेड करना है सर, जल्दी से अगर आप बता पाए। देखो, ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड अडानी ग्रीन जो है उसको मैंने रिकमेंड किया हुआ है 980 के आसपास। मैं क्लाइंटों को डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। और एक चीज की ये 980 का अभी ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस डाल दो, जितना जाना है। अगर पॉजिटिव आता है तो और मिलेगा, अगर निगेटिव आता है तो कॉस्ट के ऊपर निकल जाएंगे। और डिफेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएड की आप ही के शो के ऊपर मैंने एक चीज कही कि 260 के आसपास लेना है, 300 रुपए के आसपास टारगेट, और ऑलमोस्ट अभी वहीं पे खड़ा है। तो जिनका भी लोअर लेवल से लॉन्ग है, कुछ ना कुछ एटलीस्ट बुक करते जाइए। क्योंकि देखो मार्केट ऐसा हो जाएगा कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, फिर एक लोअर लेवल ऐसा झटका लगाएगा, फिर आप जो प्रॉफिट आ रहा है उसको लॉस में कन्वर्ट होगे और फिर आप वहां पे बुक करोगे। और थोड़ी देर में या फिर 2-4 दिन के बाद देखोगे कि मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो वो चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बुक करें, नीचे आता है तो फिर देखा जाएगा, थोड़ा सा क्वांटिटी फिर से ऐड आप कर सकते हो। मनोज सर, आपसे अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी कल हम लोगों ने देखा कि कंजम्पशन को लेकर सरकार कह रही है कि उतना डाउन नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द कमेंट्स फ्रॉम द जोमेटो सीईओ दीपेंद्र गोयल? उन्होंने कहा कि अगर देखिए अगले साल मुझे अगर घाटा होगा, जिसके पीछे सरासर अगर सारा खेल जो है कि शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो खाना मंगाना कम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द एचयूएल? उन्होंने छोटे पैकेट्स में तेल, साबुन, सरफ ये वो पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कंजम्पशन की समस्या जो है अभी भी बदस्तूर जारी है। अब क्या कहना चाहेंगे सर? कंजम्पशन तो एक अहम मुद्दा है ही। कंजम्पशन अहम मुद्दा है और 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी कम्स फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो उसका जीडीपी पर बहुत असर पड़ेगा। ओके, बट हमारा ये भी हिस्ट्री है कि इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न ये है कि हम सस्ता आइटम लेंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन हमको जो खर्चा करना है हम वो करेंगे। और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए हैं। देखिए, हर आदमी का जो सैंपल रहता है जिसका देखने का, उसके हिसाब से उनका ओपिनियन और उनका व्यू रहता है, नजरिया रहता है। तो दीपेंद्र जी का एक है, बट हम बात कर रहे हैं बजट की और वो सरकार का व्यू पॉइंट है। एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप और मैं डिफर कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया है उसमें वो बता रहे हैं कि कंजम्पशन उतना कम नहीं हुआ है, कंजम्पशन ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि हमको ज्यादा बहुत ड्रास्टिकली हमको कोई टैक्स कट्स वगैरह नहीं दिखेंगे। द गवर्नमेंट वुड रादर गो फॉर कैपेक्स बिल्डिंग देन कट इन कंजम्पशन। हैविंग सेड दैट, जैसा कि को पैनलिस्ट ने बताया है कि कुछ ना कुछ तो हमको देना पड़ेगा। मोदी जी ने लक्ष्मी को क्या आह्वान किया है गरीब और मिडिल क्लास के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। 50,000 1 लाख रुपए तक के लिमिट्स बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस पे जीएसटी निकल जाएगा। ऐसे छोटे मोटे जो अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जिससे पॉपुलैरिटी प्लेइंग टू द गैलरीज जैसा वैसे कुछ हो सकते हैं। हम जो बिग बैंग रिफॉर्म्स देखते हैं कि टैक्स कट, ड्रास्टिक टैक्स रेट्स में कटौती हो जाएगी, ऐसा उम्मीद नहीं है। ओके, फोकस मेरे हिसाब से प्रोडक्शन पे ज्यादा होगा, कंजम्पशन पर नहीं। तो इन्वेस्टमेंट इंकरेज करने के हिसाब से पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगे, ये मेरा मानना है।
बहुत शुक्रिया संदीप ग्रोवर साहब, आपका भी और तमाम जितने भी गेस्ट, मिथिलेश जी आपका भी, मनोज जी आपका भी। लोकसभा में देखिए निर्मला सीतारमण जी पेश कर रही हैं बजट। अब आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। Stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushuloy, meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses.
Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For our
Atmanirbharta in urea production. Our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors, which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors,
our government will undertake specific policy and facilitation measures to enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector. A focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship, and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling
will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare and cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans
to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land, and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition.
This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups.
Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly.
Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector.
In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD
provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs
For aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Va nokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi." Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment, and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end.
TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits.
In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to seagoing ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains under the new regime.
This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers, up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1 lakh 10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. महात्मा गांधी एक प्रखर लेखक और संपादक भी थे। उनके विचार जन जन तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाएं, डायरी एवं पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बनी। संसदीय पुस्तकालय में उनके लेखन को समर्पित एक संपूर्ण अनुभाग की स्थापना 9 अगस्त 1978 को की गई, जिसे नाम दिया गया गांधीयाना। इस अनुभाग में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी, उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn from this fund without Parliament's approval. भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ Good afternoon, viewers. Welcome to this post-budget analysis telecast on Sunset TV. I'm Tina Jha. With me is my colleague Manoj Verma.
So Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the year 2025-26 in Parliament, which was her 8th consecutive budget presentation, and in which she outlined the core priorities of Budget 2025, emphasizing 5 key objectives, which are driving economic growth, ensuring inclusive development, boosting private sector investment, strengthening household consumption, enhancing the spending power of India's expanding middle class. The Finance Minister said this budget aims at transformative reforms in 6 areas, which include taxation, financial sector, the power sector, urban development, mining, and regulatory reforms. Also aiming to stimulate economic expansion, enhance infrastructure, improve governance, and promote sustainable development across multiple sectors. She reiterated that these remain central to the government's agenda. We'll be talking about some of these broad objectives that the government has outlined in greater detail with distinguished experts who are joining us on the program. I'm delighted to welcome in the studio Dr. Priyadarshi Dash, Associate Professor at Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. And also joining us virtually is Professor M.K. Agarwal, Professor of Economics, Lucknow University. Anuj? जी बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह के ऐलान किए गए हैं इस वित्त बजट में उसको लेकर अपेक्षा भी थी और वित्त मंत्री जी ने जो इनकम टैक्स को लेकर 12 लाख का जो ऐलान किया वो एक तरह से बड़ा तोहफा है। जाहिर सी बात है, समावेशी विकास की बात है, विकास को कैसे गति दी जाए इस पे जोर दिया गया है बजट में, खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए एक आत्मनिर्भर भारत और साथ ही विकसित भारत का लक्ष्य ये फोकस है पूरे बजट का। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी पहलुओं से आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे जिनका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। टीना, Absolutely. So we'll get into the sector specific allocations, the kind of focus that the government has provided to the middle class, to different sectors as well. But before that, let me get in the first reaction from the guest we have with us in the studio. Professor, your first thoughts on this budget. How do you see it building up on the budget which was presented soon after the election 6 months ago? I think you are right. The finance minister presented the budget which sort of prepares the blueprint for the Viksit Bharat. And this is a continuation of the stand they have taken in the last 4-5 years to prepare the country to meet the emerging challenges of meeting sustainable development, making a smooth energy transition towards clean and other areas, solar energy and other areas. So if I see the budget, this sort of tells that story in a very deeper way compared to the past. This time you see that they have gone into the sectors, infrastructure sectors that are crucial to maintain economic growth. जी. But at the same time, how to address the vulnerabilities that people are facing. We are growing, but we have price rises. By ensuring higher medical coverage, by bringing more life-saving drugs to the scheme, John Siddhi scheme and others. So there's a kind of blend of the growth objective with social security measures, taking into account the specific challenges faced by the manufacturing sectors, MSME sectors. So overall, the budget is more of a roadmap for the future India that we can visualize in the next 20-30 years. But of course, the immediate priority would be that people see that how the taxation reforms has happened. And it's a great relief for the people, at least up to 1 lakh of their income, they are not liable to pay any tax. So overall, it looks a balanced budget. So, it's a huge relief for the middle class, but that is one aspect, the taxation part that we'll come to in just a bit. Professor Agarwal, what would be some of the significant takeaways for you, particularly from this budget? Does it meet the expectations that all of us and the different sectors had from Finance Minister Nirmala Sitharaman? See, as far as expectation of different sectors, it is never completed, but whatever we discussed and whatever we aspired for the, taking the economy forward at very high pace,
while taking all on board, that is the inclusive growth strategy and pushing the economy forward, we believe that whatever we discussed in the morning, that came true, whether it is for the middle class benefits. And in terms of middle class benefits, definitely it is the direct tax benefit. Other than that, there has been a procedural, you can say, smoothness that has been conducted. Senior citizens have been taken care of. Besides, if you are looking at the things through this, what has Nirmala Sitharaman has done is that is linking it with the growth strategy. It is not simply a dole out to the, in terms of income tax. There have been indirect taxes also, whether it is the basic custom duty, etc. There has been a great relaxation, and all are being done with the aim to promote Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For example, if custom duty has been relaxed on the cancer drugs or other drugs, so what is the objective? Objective is to promote drug manufacturing in India. So given this type of thing, we believe that the budget is very well packaged for inclusive growth strategy and developing new growth centers. Whatever it is called, it is the growth engines that Nirmala Sitharaman has called. There are 4 growth engines she has defined through. And then efficient production structure that has been highlighted very well in this budget. So that is the hallmark, and it is in continuity with the earlier budget, whether it is for the 24-25 or even earlier budget, or it is linked with the next 5 to 10 budgets. You will find that it is the base or the ground for the next 5 to 10 budgets. You can read out what is going to come for the next few budgets. So I believe it is highly growth centric, highly it is equity oriented, and highly it is for the new growth momentum to be generated in the economy. So I believe it is a great source of इंस्पिरेशन फॉर द फर्दर बजट्स। जी बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है, और जैसा निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा कि समावेशी विकास को गति देगा ये बजट। सबका ख्याल रखा गया है इस बजट में। एक तरह से कहा जाए कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने का कोशिश की है निर्मला जी ने। मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात हम और दूसरे पहलू पर भी करेंगे, लेकिन बात मैं करना चाहता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, किसानों की। क्योंकि अगर देखिए, चाहे मखाना बोर्ड के गठन की बात हो बिहार में, या कपास के किसान की चिंता हो, या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स का निर्मला जी ने अपने बजट में ख्याल रखा है और अधिक से अधिक देने की कोशिश की है। क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो हमारी जीडीपी को ग्रोथ देने का काम करती है, उसे गति देने का काम करती है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक रेसिडुअल सेक्टर के हिसाब से नहीं मानना चाहिए। जी, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्रीकल्चर को हमने कभी इंपोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी ये मान लिया जाता है कि वहां पे डिपेंडेंस ज्यादा है, शायद इसी तरह ही एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन होगा। बट ये जो थोड़ा डीप थिंकिंग है इस बजट में, कॉटन बोर्ड, ये जो मखाना बोर्ड, ऐसा करके जो पोस्ट ऑफिस को एक ज्यादा तो रोल दिया गया है, मुद्रा स्कीम, ये जो स्कीम को प्रमोट करने के लिए विश्वकर्मा जो सब है उनको, तो ये एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग का अप्रोच रखा गया है कि जो स्कीम सरकार लागू करती है वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं ग्राउंड में, और अगर कुछ गैप्स रह जाता है तो शायद ये पोस्ट ऑफिस का जो 2.5 लाख जो सेवक होंगे जी, उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि प्रोग्राम का सक्सेस का पैटर्न क्या है, ये सच में मदद करता है कि नहीं टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अदर थिंग्स। उसको छोड़ के जो एमएसएमई और जो स्टार्टअप को जो बढ़ावा दिया गया है, जो क्रेडिट गारंटी के जरिए वो दे रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे लास्ट जो पीछे प्रेजेंट किया गया कल, उसमें ये बोला गया है कि अर्बन डिमांड हैज स्लोड डाउन, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी काफी फेवरेबल है, जो जिसके वजह से अभी कंजप्शन, ओवरऑल कंजप्शन जो इंडियन इकोनॉमी में वो अच्छा है। तो रूरल सेक्टर का ये जो मोमेंटम है, उसको मेरे ख्याल से बजट का जो ऑप्टिमिज्म जो क्रिएट किया गया है, खाली फाइनेंस दे देने से नहीं होगा। फाइनेंस का साथ जो इंसेंटिव का पैकेज करना था
थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दिशा दिखा रहा है। जी बिल्कुल टीना, जैसे देखा जाए कि दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, इस दिशा से भी एक 6 साल का मिशन शुरू करने की सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। टीना, You're right, Manoj. And since we're talking about agriculture, let me remind our viewers that in the budget that was presented soon after the elections in July, agriculture was among the top priorities in the list of 9 priorities that the government had announced. In this budget, we are seeing the consistent focus on the critical agriculture sector, which contributes significantly to the country's growth, also generates significant employment, very critical for the country's growth. Professor Agrawal, and towards agricultural focus, we're seeing a new scheme coming up, the Dhan Dhyan Krishi Yojana, which is going to cover 100 districts with low yields, modern crop intensity, and below average credit parameters. Now, how do you see this strengthening our efforts, the existing efforts of the government towards increasing productivity and at the same time increasing resilience? See, this is the strategy. Those who were outside the growth momentum of the nation or the economy, these were the outliers. Just look at it, these were the outliers, low productivity districts. Now they are being transformed into high productivity, high value addition crops. So that is the strategy, and this is, you can say, convergence. What we call in economics, it is the convergence moment, that is those who have been lagging, they are given a big push so that they are moving with high growth, so that they can come up with the mainstream growth momentum. And this is about it is not only in one state, across. Similarly, if you are looking, this is for the Atmanirbhar. So you will find many, objectives are being fulfilled through one stroke. That is Atmanirbhar Bharat Abhiyan is being fulfilled. Similarly, if you are looking at the urea, you will find that it is being established in the eastern part of the country, so that we are Atmanirbhar in terms of urea supply to the farmers. Similarly, you will find that Kisan credit card, they are being recharged double. That is, instead of 3 lakh rupees, now it will be 6 lakh rupees. So credit flow has also been increased so that they don't feel any constraint with regard to the availability of funds for taking agriculture forward. So this is the way that this strategy is there, and you'll find the rural sector has been given a big push here. This is what we were discussing in the morning, that the economy is being pushed across the sectors, whether it is the agriculture sector. So what earlier we were thinking about, that agriculture is a lagging sector or a dependent sector, now no more it is a dependent sector. The way Modi government is putting thrust on the agricultural sector, it will be a great propellant in the coming years. Already the growth rate, if you are looking through the economic survey for the current fiscal, you will find the growth rate is much higher after being higher in the earlier years also. So it will be a propellant for the overall economic growth rate, and that's why we are chasing a growth rate of 7% plus in the next few years. So that's why we should look with this perspective, and this is the strategy, that rural income and farmers' income has to be doubled in the coming period very soon. जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से प्राथमिकता बजट में दी गई है और रोजगार को सृजन कैसे हो एमएसएमई सेक्टर के जरिए, इस पर खासा फोकस किया गया, काफी जोर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गिग वर्कर्स को अभी तक हम लोग अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे जी। अगर आप गिग वर्कर्स को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अर्बन वर्किंग क्लास डेवलप हो चुका है, जो अपने दम पर काम कर रहा है। उनके लिए एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने से क्या होगा, ये जो सेक्टर इमर्ज किया है करोड़ों लोगों का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत बड़ा काम करेगा।
अपने ऊपर काम करने की, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है, और जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख करके चलते हैं तो मुझे लगता है एक ये बड़ा बूस्ट हो रहा है। दूसरा, जैसे बात आ रही है कि एमएसएमई सेक्टर को, और इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जिस सेक्टर को अभी तक हम लोग सुनते नहीं थे, अभी 2-4 वर्षों से सुनना शुरू किया है, टॉयज को लेकर के जो एक अलग बोर्ड गठित हो रहा है। भारत की अगर डेमोग्राफी को आप देखते हैं और विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी का जो इस पर फोकस है, इस पर फोकस ठीक वैसे ही है जैसे स्टार्टअप पर है प्रधानमंत्री जी का। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर टॉयज बन रहा है, एमएसएमई सेक्टर। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक होकर के देखते हैं तो आपको लगेगा नए नए सेक्टर को सृजित किया जा रहा है ताकि वो बहुत तेजी के साथ इमर्ज कर सके, न केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, न केवल जो है अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न केवल अपने स्टार्टअप के माध्यम से या अच्छी पूंजी के माध्यम से, बल्कि उनको ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पीट कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो सृजन हो रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए नए नए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। Rightly said, Professor, and that's why the finance minister described the MSME sector as the second engine of growth in her budget speech. She said through the measures that she's announced today, the focus is on the 5.7 crore MSMEs, which include over 1 crore registered businesses, employing 75 crore people and contributing 36% to India's manufacturing. The MSMEs, remember, play a very crucial role in positioning India as a global manufacturing hub and accounting for 45% of the nation's exports as on date. Professor Dash, how significant are the measures that the finance minister announced for the MSME sector in her budget? Yeah, I mean, as I said, the credit guarantee cover by increasing from 5 crore to 10 crore, and for the startups from 10 crore to 20 crore. And then a specific incentive for those who are exporting MSMEs. So this is kind of not giving incentive in a blanket way, but rather targeting the incentives the way it works. Like those who are exporting MSMEs, to giving them additional incentives so that they could sort of focus on what are the marketing strategies they need, how sort of product development efforts they should do. If you compare that with the overall manufacturing ambition, by creating national manufacturing mission, and then thinking about skilling, and then expanding the capacity of IITs and others. So overall, it's a mix of promoting the industry, preparing the people to sort of work in those sectors, and at the same time, extending social security to the digital platform workers, gig workers. So all together, the industry push that they give in the third pillar, like investment as the engine, overall, it looks quite impressive in terms of the intent of the budget. Now, everything will boils down to the implementing ministries, that how do they target those implementation and see that this actually works, because manufacturing is the subject matter of discussion now. Despite of so much of policy announcement, made in India, make in India and other things, this PLI scheme, we have not been able to give the result which would sort of impress everybody that yes, we have done something. Sure. Before we proceed and discuss another sector, let me welcome on the program Professor Charan Singh, CEO, eGrow Foundation. Professor, glad to have you with us on this telecast. Your first reaction, sir, on this budget, which is in a way building up all the measures, all the announcements that the government had made back in July 2024. I'm very impressed with this budget. And I think, firstly, the most important thing, the objective that they spoke about, Viksit Bharat 2047, I see that it is in the same direction. That is something very important. Secondly, I see continuity. In the last budget, the finance minister had spoken about youth, women, farmers, poor people. That continuity is there. The third, the FM has pointedly spoken about the fiscal policy, about the financial sector policy. I'm very impressed because the budget is a tool of a fiscal policy, and so much of emphasis directly being given to both is very impressive. I'm also very impressed
we all knew in the last few months, there's a big problem coming up on consumption. And we were all saying that the middle class needs to be now supported. For the categories for which policies and the budget has been announced, you would notice that the emphasis on the middle class has improved significantly. Consequent to that story on the middle class, the tax reforms, firstly, the ones which are being announced to be presented in the parliament next week, as well as the tax rates which have been announced today, specifically on senior citizens and tax exemption for incomes less than 12 lakhs, I think is path-breaking. So the middle class has been catered to, and that means this government listens and they analyze, and whatever is possible, then they accommodate. With tax buoyancy taking place, little headroom available, I think the budget has done great justice to the objective of the middle class. Overall, I would say, given the situation of the economy, a slowdown that has happened, the government is trying to correct that, giving it an impetus on MSMEs, as you heard it. They have also been talking about female labor force participation, daycare centers and what all that's going to happen, as well as industry. The last point I would like to mention in this is the trust factor. The trust factor is being emphasized, and I'm very happy with that, because in case you have trust on the private sector, then you can invite the private sector to shoulder work in Viksit Bharat March. Otherwise, for the public sector, yes, you can crowd in investment, capital expenditure can increase, which has increased. The fiscal deficit is in control, so rating agencies must be happy. The exchange rate will be in control. All that is being done. But the trust that is being now inspired through the private sector, I think is very, very good. So I'm very impressed. प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक की छूट का ऐलान किया गया है, जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद एक बड़े वर्ग को थी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं और हमें विस्तार से बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, लोगों के जीवन पर, क्योंकि एक वर्ग है देश में जो पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। एक नया मध्यम वर्ग ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, जिसकी तरफ सरकार बार-बार इशारा कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, जो हमारा मध्य वर्ग है, ये कुछ वर्षों से आप जानते ही हैं, कुछ इन्फ्लेशन की मार थी और कुछ एम्प्लॉयमेंट का भी जोर था, अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी का आपने आंकड़ा देखा है, कल इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि 6% से 3% पर आ गया है। इसका मतलब वहां पर भी, उस पहलू पे भी थोड़ा काम किया गया है, लोग रोजगार उनको मिल रहा है। पर क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन थी, तो वो आपकी जो अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। एक बात आपने देखा होगा, और कुछ लोगों ने और हम सब लोगों ने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूम करनी बंद कर दी थी। और तो और पीछे रह गया, जो जीवन बीमा है या जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पहली कटौती करते हैं तो वहां करते हैं। उन तरीके से एक स्ट्रेस दिख रहा था कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो थोड़ा अपना खरीदा खरादी में कमी कर रहे हैं, या कुछ चीजों में ऐसे दिख रहा है कि उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, आपकी आय में उस तरीके से कुछ कटौती होती जा रही थी, इरोजन हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ये सब बढ़ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? तो जिस तरीके वित्त मंत्री ने आज सीधा 12 लाख पे कह दिया कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, इसका मतलब 12,75,000 तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये मध्य वर्ग के लोग, कुछ तो जैसे आपने कहा कि लो इनकम ग्रुप से या पॉवर्टी रेखा से ऊपर आ रहे थे, पर कुछ जो ऐसे थे जिनको एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आ रहा था या इन्फ्लेशन का चैलेंज आ रहा था, उस मध्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके हाथ में भी कैश ज्यादा आ गया। तो जब उन्होंने कहा कि अब टैक्स स्लैब्स में भी उन्होंने चेंजेस किया है, पर उन्होंने जो अपने कैलकुलेशन बताया कि जो एंट्री लेवल पे या मिडिल इनकम ग्रुप है, उनका इस 12 लाख तक लिमिट ले जाने से 80,000 रुपए का
उनको जैसे हाथ में फायदा हो गया। 80,000 का मतलब आप देख लीजिए कि करीब 6,500 रुपया हर महीने का उनका हाथ खुल जाएगा। वो कहाँ जाएगा पैसा? वो खर्च होगा। जब पैसा खर्च होगा, जिन चीजों को रोक के रखा हुआ था, जब पैसा खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उससे एक साइकिल शुरू हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कुछ ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो जो पिछले सेकेंड क्वार्टर में 5.4% ग्रोथ आया था, जो हमारे अनुमान से काफी कम था, उस अनुमान के कारण कंजम्पशन के प्रेशर दिख रहा था, उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग विश्लेषण करते हैं, बात सुनते हैं ये सरकार, और उसके बाद एक उपाय निकालते हैं। मेरी राय में ये उपाय ठीक निकाला है। इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, इकोनॉमी का साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरी राय में ये कदम बहुत अच्छा हुआ है। और जो लिमिट इन्होंने 12 लाख पे रखी है, वो भी बड़ी अच्छी लिमिट रखी है। आप कह सकते थे 6 से 9 कर सकते थे, 6 से 10 कर सकते थे, पर जिस तरीके इन्होंने लिमिट रखी है, उसको बड़ा अनुमान लगा के रखी है कि 80,000 रुपए का फायदा एक पुरुष महिला को मिल जाएगा जो कमा रहे हैं। उससे इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। तो मैडम ने, एफएम ने, ऑनरेबल एफएम ने कहा कि ये सारी जो हम लोग इनकम टैक्स पे रियायतें दे रहे हैं, उसका हम लोगों को कितना एक चोट पड़ रही है। पर क्योंकि टैक्स बॉयंसी है, जीएसटी का रेट अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम लोग इसको अफोर्ड कर पाए हैं। You're right, Professor. So while you know that increased income tax exemption, Professor Dash, provides a massive welcome relief to the middle class who is rejoicing, the markets have turned red to this kind of announcement. What are the implications that you see in the coming days of this measure, which benefits the middle class, and they had been anticipating, demanding this from the finance minister, but on the government's purse, on the markets? See, I think we have to see it holistically. On the fiscal front, the macroeconomic management has been good, as she reiterated in the budget, that the fiscal consolidation will continue. But if you see the media coverage in the last, on the run-up to the budget, there have been a few concerns as well, that the wage has not grown the way it should have increased. I'm not going into the statistics, whoever has written, that may be subject to methodology and data they have used. Urban demand has gone down. Yes. So the multiplier role that the consumption demand that will play in fueling growth, along with the capex, it is going to happen as Dr. Singh mentioned, but the whole thing would depend on how are they sort of managing the burden on the exchequer. The burden on the exchequer is that the pay commission has been announced. Now, in 1 year down the line, there will be a large payout. So there is a lot of optimism that it will go into 2.57 more than 2.57 than seventh pay. So the fiscal room that the government is enjoying now probably will not worsen, but it will kind of be a situation where they have to choose what sort of incentives they can offer. But otherwise, the consumption is going to increase because the disposable income will increase because of this thing, because you are not paying more in terms of the tax. So there is less leakage from your income. So you will spend more. Capex is generating more income anyway because that is project expenditure and building of infrastructure. So overall, it looks quite favorable on the consumption side. So investment and the consumption, the two critical enablers of the economy, for the time being looks quite favorable. Now, how the global uncertainty will play out, how will be the response of the Trump administration to some of the things that the Biden Trump administration has indicated in terms of tariff and other things. So if those things doesn't escalate and the global uncertainty sort of meddle down or sort of precipitate around what has been already mentioned or what has been highlighted through the World Economic Outlook by IMF and World Bank outlook, then I think domestic economy will be on the rail, on the track,
not much mismanagement is going to happen in that way. Right. So we're going to keep discussing about some of the other important announcements made by the finance minister in her speech this morning. But for those of you who missed listening to her 1.5 hour long speech, here is a quick highlight of some of the important announcements made by the finance minister in her 8th consecutive budget. Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive healthcare, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Viksit Bharat. जाहिर तौर पे जिस तरह निर्मला जी ने अपने बजट में इस बात का जिक्र किया कि सरकार का फोकस पिछले 10-11 वर्षों में खास तौर से गरीब कल्याण योजनाओं पर रहा है, यूथ पे रहा है, अन्नदाता को किस तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इसका फोकस भी इस बजट पे देखने को मिलता है। पहले भी इस तरह की जो हमें देखने को मिला है, और साथ ही नारी शक्ति को किस तरह से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इस बार भी उस पर फोकस रखा गया है। निर्मला जी ने इसका जिक्र किया। प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे और समझना चाहूंगा, खासतौर से जो 12 लाख की इनकम टैक्स का मुद्दा है, मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्योंकि एक देश में एक सर्विस क्लास है जिसको लंबे समय से बहुत अपेक्षाएं थी। सरकार ने जीएसटी जैसा सुधार किया, सरकार के पास पैसा भी आया, और सरकार ने उस पैसे को एक अपने खजाने को, एक तरह से मैं कहूं राजकोषीय घाटा एक चुनौती है, लेकिन साथ ही देने की भावना जो है सरकार की, वो दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं जो सर्विस क्लास है? 8वां वेतन आयोग भी सरकार ने अनाउंस किया है। बिल्कुल, सरकार ने 8वां वेतन आयोग अनाउंस किया है, तो उससे भी तो मिडिल क्लास को फायदा हो ही रहा है। उसके ऊपर हाउसिंग जो इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की, उसमें भी फायदा हुआ। उड़ान स्कीम जो किया है, और अभी इस बार के बजट में भी किया है, जहां वो कह रहे हैं कि 120 और एयरपोर्ट्स बनेंगे और उड़ान स्कीम का फायदा होगा। सो जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज की जो स्कीम थी वो भी हुई। उसके अलावा जो आयुष्मान स्कीम्स निकाली, जो इंश्योरेंस स्कीम्स निकाली, वो सब, और मुद्रा लोन में जैसे लिमिट बढ़ाया, वो सारा एक मिडिल इनकम ग्रुप को ही एड्रेस कर रहा है। और मेरी राय में हम ठीक कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके का बजट से पहले काफी लोग कह रहे थे कि मिडिल क्लास को नहीं मिल रही है राहत और वो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट दिख रहा है, वो ठीक बात है। पर क्योंकि ये बात सामने आई और क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन इकोनॉमी में सेकंड क्वार्टर में स्पेशली हुआ, तो सरकार ने उसका रेमेडियल मेजर निकाला, जिसके नीचे ये जो 12 लाख की बात हुई। अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ रही है, जो अगले हफ्ते कह रहे हैं कि हम लोग अनाउंस करेंगे, उसमें भी जो समझ में आ रहा है कि सिंप्लीफाइड होगा, कॉम्प्लायंसेस भी सिंप्लीफाइड होंगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अलावा जो बाकी के डिडक्शंस आती थी जो कॉम्प्लेक्स कर देती थी टैक्स सिस्टम को, वो सारी जैसे वो रैशनलाइज कर दी जाएगी। उससे टैक्स सिस्टम एकदम सिंपल हो जाएगा।
एक साइड में जो कंप्लायंस का डर था कि इतना अनसर्टेनिटी रहती है टैक्सेस में, इतने टैक्स के स्लैब्स हैं, इतने उसमें डिडक्शंस हैं, उनको आप एक किस्म का कंफ्यूज ही रहते हैं कि कहाँ पे मुझे किस उसके नीचे राहत मिल सकती है। वो सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी जाएंगी अगले हफ्ते। तो उससे दो तरीके से एक मिडिल इनकम जो ज्यादातर टैक्स का बर्डन हैंडल करता है उनको फायदा होगा। एक तो टैक्स का अमाउंट कम हो गया क्योंकि डिडक्शन बढ़ गई। उसके बाद टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए, और टैक्स स्लैब्स भी जो रिवाइज किए गए वो बड़ा सिंपल से कर दिए गए। 4 लाख रुपए तक नील है, 4 से 8 5 है। देखिए अब मल्टीपल ऑफ 5 पे चल रहे हैं, बड़ा सिंपल चल रहा है। 4 से 8 5 है, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, जो 20 से 24 25 और अबव 24 लाख 30% है। टैक्स कलेक्शन तो करना है, टैक्स कलेक्शन जरूरी है। टैक्स कलेक्शन के कारण आप फिर आगे एक्सपेंडिचर